Hello all. Today we are starting with new topic that is Chomsky normal form and CFG conversion to CNF. How do we convert a given context-free grammar into a Chomsky normal form that is proper language? So over there are few rules to be learned. So I have taken this from a reference video which says in Chomsky normal form that is CNF we have a restriction on the length of RHS, which is elements in RHS should be either टू वेरिएबल्स और अ टर्मिनल्स. तो जब भी हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं और इफ वी हैव टू कन्वर्ट अ सीएफजी टू सीएनएफ देन वी हैव टू मेक श्योर दैट कि जो राइट हैंड साइड के रूल्स है वो फॉलो हो. जो राइट हैंड साइड के रूल्स है दैट इज फर्स्ट दैट इधर इट कैन बी अ टर्मिनल सिंबल यानी स्मॉल लेटर्स वो हो सकता है या फिर देर विल बी टू वेरिएबल्स और से टू नॉन टर्मिनल सिंबल्स. ये दो ही फॉर्म के productions allowed है in Chomsky normal form. A CFG is said to be in CNF if and only if उसका productions अगर ऐसे form में आए. So what are the steps for that? Let us have a quick go through it. It says if the start symbol S occurs on some right hand side, create new start symbol S dash and a new production S dash tends to S. यानी अगर आपके प्रोडक्शंस में कहीं पे भी S आता है on the right hand side of the production, then एक नया स्टार्ट सिंबल एस डैश स्टार्ट करना पड़ेगा और एक नया प्रोडक्शन लेना पड़ेगा एस डैश टेंड्स टू एस. The second step is to remove the null productions which we have seen in the previous videos and also removing unit productions that also we have seen in previous lectures. So after this step, we are replacing each productions A gives B1 Bn where n is greater than 2 with A gives B1 C. यानी जहां पे जरूरत है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक नए सिंबल से. So these are the 5 steps basically. Last 2 steps में इसके लिए explain नहीं करी because it is very confusing to understand like this. It will go totally bouncer. So let me help you with an example over here. Yeah. So this is the Chomsky normal forms example we are taking over here. It says convert the following CFG into CNF. So यहाँ पे production दिया है S gives ASA and it gives AB. A gives B and S. B gives B and epsilon. Now, as you can see here, S is appearing on the right hand side. तो अपना first rule says that if you see over here, the first rule says अगर S आता है on the right hand side, then we create a new start symbol S dash and the new production S dash gives S. So that is what we are doing over here. It says since S is appearing on the right hand side, we are adding a new state or say new start symbol S dash and a new production S dash gives S. So after adding this S dash, the production becomes S dash gives S. S gives ASA and AB, A gives BS, B gives B and epsilon. यानी ये सिर्फ नया प्रोडक्शन ऐड किया है, बाकी के जो है वो एज इट इज हमने कॉपी किए हैं. The next step says remove null productions. Now previous video में हमने देखा था कि null productions remove कैसे करते हैं. So over here, if you see, B is giving epsilon, that is null production, but you also see that A gives B. यानी अगर यहाँ पे मुझे B को substitute करना है तो मैं यहाँ पे epsilon substitute कर सकती हूँ, which also means that A is also giving null productions. So here we have considered two states for two cases for null production, that is A gives epsilon and B gives epsilon. तो सबसे पहले we'll try for removing this production, that is B gives epsilon. So S dash equals to S as it is रहेगा. S का as it is रहेगा. See ASA and AB लिखा है, but because this capital B gives epsilon, तो अगर यहाँ पे मैंने epsilon substitute किया, so I will get over here A. That is the extra terminal I have added over here. See, I have written that AB gives A. ये हमने करना पड़ता है, ये step है. तो A B के जगह पे epsilon substitute किया, तो finally what we get is A. Then यहाँ पे भी देखो B S as it is देखो एक epsilon add करो because यहाँ पे if you add epsilon to B, then you can also have A gives epsilon over here. So here we are keeping the original values plus we are keeping the values we get after we substitute the given production. Then B gives epsilon भी है and B gives B है, तो epsilon निकाल दिया, सिर्फ B यहाँ पे रखा है. So this is a new productions we get after removing the production B gives epsilon.
नेक्स्ट वी स्टार्ट विद रिमूविंग ए गिव्स एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे ए गिव्स एप्सिलॉन आया है एंड द सेकंड स्टेप से नल प्रोडक्शन सारे हटाने हैं. सो ए गिव्स एप्सिलॉन मतलब जहां जहां ए आ रहा है वहां वहां एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करके what new variables or what new terminals you get, that you have to substitute. So first production will be as it is. Now s gives, ये तीनों हमें as it is लिखने हैं. इसके अलावा now since capital A is giving epsilon, so I can substitute it over here or both the sides. So अगर मैं ये a यहाँ पे substitute कर दी हूँ तो I will get as. अगर मैं ये एप्सिलॉन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, I get SA, so that is over here. And अगर मैं दोनों जगह पे if I'm substituting, I am getting only S. So these are the new productions I get when I substitute A is equals to epsilon. Then I have A gives B, S and epsilon, so epsilon उसमें से निकाल देना है, and then B gives B as it is. So this was the steps for removing null productions. Now next step is to remove unit productions. Now as we have seen, unit productions is S gives S. वो S gives S क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे अगर A epsilon substitute किया तो ये production में S gives S आएगा, क्योंकि ये दोनों A जो है वो null हो जाएगा. So यहाँ पे हमने दिया है देख that S also gives S. So in that case ये जो unit productions है यानी single terminals है वो allowed नहीं है. If we check the rule, it says sorry, it is given over here. Sorry, just a second. Yeah. So ये रहा रूल कि या तो एक स्मॉल लेटर हो सकता है दैट इज टर्मिनल, या फिर दो नॉन टर्मिनल सिंबल्स. एंड इफ यू चेक ओवर हियर, यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शंस मतलब ये सिंगल सिंगल नॉन टर्मिनल्स है विच आर नॉट अलाउड. सो ये सारे यूनिट प्रोडक्शंस हटाने पड़ेंगे. सो हाउ डू वी डू दैट? फर्स्ट आफ्टर रिमूविंग S gives S, यानी S dash gives S तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने ऐड किया है. नाउ S gives S कैसे हटा सकते हैं? S के प्रोडक्शंस सारे लिखो और बिकॉज S gives itself that is S, तो यानी यही प्रोडक्शंस आएगा सेम. देन A gives BS and B gives B सेम रहेगा. तो इसमें से हमने S हटा दिया है, तो S के जो ओरिजिनल प्रोडक्शंस है सिर्फ वही लिखे हैं. Next, we are also removing S dash gives S because this is also unit production. So what we'll do, instead of keeping this unit production, हम S के सारे productions जो है वही यहाँ पे लिख लेंगे in S dash also. So S dash is giving this, even S is giving the same productions. So इस तरह से हमने यहाँ का unit symbol ये यहाँ से ये remove किया है और यहाँ से ये substitute करके remove किया है. So दो unit productions हो गए. After removing that, we are going for A gives B, यानी ये unit production निकालना है. So S dash and S will be same. अब A gives B, but B is also giving small b, so instead of this I'll simply write small b and S. So A production remove हो गया, that is A gives B by substituting B gives B over here. And the last production we are remaining with is A gives S. So A gives S भी हटेगा. जैसे हमने B के जगह पे इसका सब्स्टिट्यूशन दिया है, सिमिलरली A gives S के जगह पे instead of this S will give all the productions that is given by S. So if you see that this B is written over here, S के जगह पे इसके सारे productions लिखे हैं. So this is how we remove the unit productions. Now after removing unit productions, what we'll check is if there are only two variables or not. Because if you go by the rule कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सिर्फ दो वेरिएबल्स होने चाहिए, दो नॉन टर्मिनल सिंबल्स होने चाहिए. बट इफ यू सी इन दिस वीडियो देयर आर मोर देन टू वेरिएबल्स, मोर देन टू नॉन टर्मिनल सिंबल्स. तो उसको कैसे रिमूव करना है ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.